Bismillahirrahmanirrahim. How are you, my dear students? I hope you all will be fine by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala. Today we are going to read verb exercise number 4. As you know, we already have done verb exercise number 1, 2 and 3. So it's time to read verb exercise number 4. In this exercise, we will read past perfect tense and past perfect continuous tense. Let's start reading. Past perfect tense is used to describe an action completed at some point in the past. किसी ऐसे काम को बयान करने के लिए इस्तेमाल होता है जो कि माजी में मुकम्मल हो चुका होता है। परफेक्ट का मतलब ही कंप्लीट होता है यानी मुकम्मल। आई हैड लेफ्ट द हाउस बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग। बेटा आप देखें इसमें दो क्लॉजेस हैं जिसमें एक हैड प्लस थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है, लीव की थर्ड फॉर्म होती है लेफ्ट, और बिफोर इसमें कंजंक्शन इस्तेमाल हुई है इट स्टार्टेड रेनिंग। स्टार्टेड इज़ द सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। इससे हमें ये क्लू मिल रहा है कि ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट है। तो एक्चुअल जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है उसमें एक एक्शन जो है वो हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बताते हैं और एक इनडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं, तभी जाके हमारा कंप्लीट पास्ट परफेक्ट टेंस बनता है। आई ऑलवेज आस्क माई स्टूडेंट टू रिमेंबर दिस फॉलोइंग एग्जाम्पल। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। In this sentence, you can find that one clause is in past perfect tense, had died, and the second clause is in past indefinite tense. So it is complete perfect tense in which you can find first action is in past perfect and second action is in past indefinite. You have to keep this thing in your mind. जो भी काम पहले नंबर पे होता है उसके लिए आपने हैड प्लस थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है, और जो काम दूसरे नंबर पे होगा उसमें आप सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। ओके, नाउ सी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। Past perfect continuous tense is used to describe an action which had been going on for some time and finished at some definite time in past, जो कि एक ख़ास वक्त तक माजी के ज़माने में होता रहा है काम और माजी में ही कहीं ख़त्म हुआ, तो उसको बताने के लिए आप पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। नाउ सी एग्जाम्पल। शी हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। वो सुबह से काम करती रही थी। इसमें आप देखें कि सिंस और फॉर का इस्तेमाल है, और आपको पता है कि जब भी सिंस और फॉर का इस्तेमाल होता है तो हमसे कोई भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस लगाने की डिमांड की जा रही होती है। तो आज जो हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं उसमें हमसे पास्ट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को यूज़ करने को कहा गया है। तो हमने ये याद रखना है कि इसके लिए हेल्पिंग वर्ब हमारे पास है हैड बीन, और मेन वर्ब की हम आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। जब भी हमारे पास सेंटेंस में सिंस और फॉर का इस्तेमाल होगा हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करेंगे, और उसको इस्तेमाल करने के लिए आपको मैंने बताया है कि हेल्पिंग वर्ब तो हम हैड बीन का इस्तेमाल करेंगे और फॉर्म ऑफ वर्ब हम लगाएंगे आईएनजी फॉर्म। सेकेंड एग्जाम्पल है इट हैड बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट। यू कैन सी दैट हैड बीन इज़ यूज्ड एज हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब इज़ इन आईएनजी फॉर्म। Okay, let's see its exercise. Put the verbs in brackets in the correct form, either past perfect tense or past perfect continuous tense. First sentence is after you dash I went to sleep. Went to sleep is giving you the clue that you have to use had plus third form in the first blank. You have leave as your helping verb, and you will put had as your helping verb, and you are going to use third form of the verb leave. So the sentence would be like this: after you had left I went to sleep. Second sentence is they dashed their breakfast after they had washed their hands. Had washed, past perfect tense, had plus third form is used, so we are going to use second form of the verb take. So the sentence would be like this: they took their breakfast after they had washed their hands. Third sentence is I dash on this assignment for a month. इस सेंटेंस में देखें बेटा फॉर का इस्तेमाल है। इट मीन्स दैट वी हैव टू यूज़ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। We will use had been as helping verb, and we will use
ing form of the main verb work. So the sentence would be like this: I had been working on this assignment for a month. Fourth sentence is Ali dash for his examination since October. Again in this sentence you can see since has been used. So we will again use past perfect tense. Our sentence would be like this: Ali had been preparing for his examination since October. Fifth sentence is she dash why we had wanted to leave early. You can see had plus third form has been used, so we will use second form in the other blank. So our sentence would be like this: she asked why we wanted to leave early. Sixth sentence is I asked her what places she dash in Europe. You can see that second form of verb has been used, so we will use had plus third form in the blank. Our sentence would be I asked her what places she had visited in Europe. Seventh sentence is the sun dash before we were ready to leave. Here were has been used as the second form of verb be, so we will use had and third form in the blank. Our sentence would be like this: the sun had not risen before we were ready to leave. Eighth sentence: I had never seen snow before I dashed to Murray. Had plus third form has been used, so we will use second form of verb go. Sentence would be like this: I had never seen snow before I went to Murray. Now see sentence number 9. Aslam dash for 3 hours. You can see that for has been used in this sentence, so we will use past perfect continuous tense. Aslam had been swimming for 3 hours. Last sentence is the bus dash before we stepped out. The bus had stopped before we stepped out. This was our today's lecture. Thank you so much. Fill your book accordingly. Allah Hafiz. Take good care of yourselves.